The first big story tonight. Falling in line, the government this morning finally submitted, as requested by the Supreme Court or demanded by the Supreme Court, a secret list of names of 627 Indian black money account holders. Only the chairman and vice chairman of the special investigation team now have the power to open those sealed envelopes. What's important is the SIT has 4 months to complete the investigation. One big question remains: will these names really take the investigation further? Jaskirat Singh Bawa has our top story tonight. The 3 names revealed 2 days ago, now followed by another list of 627 submitted by a cornered Modi government to the Supreme Court. The much-hyped names, commonly known as the HSBC list, given in 3 sealed envelopes. The first with details of bilateral treaties with other countries, the second with the actual list, and the third with the status report of the probe. The SIT will open the sealed covers. The SIT will thereafter see what they have to do, and they will then proceed. The court refused to open the envelopes, passing them instead to the chairman of the special investigative team set up to look into the black money case, entrusting it with secrecy and its full confidence, easing government's concerns of international treaties and individual privacy being violated. I have to go and see the list properly. I don't know whether they have disclosed all the names. I don't trust anything which they say. So how do you see the role of the finance minister in this entire case? Disgraceful. The SIT has been given a 5-month deadline. It has to submit a status report next month before a hearing in the first week of December. The probe into all 627 names has to be completed by 31st of March. But the opposition is not easing its attack, accusing the government of diluting the list, keeping out the big names that matter. मेरी खबर के मुताबिक बड़े-बड़े नाम जो हैं, जो नाम मैंने उजागर किए थे, उन नामों को छोड़ा जा रहा है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा. The only political question which the country is asking and which we are asking on behalf of the country is a question of accountability. It's clear now that the government of India can only be pressurized by the courts, and the courts are directing it. Now today, when the Supreme Court was asked to go through the list which was already submitted to the SIT according to the government, the Supreme Court bench headed by Chief Justice of India observed, "We don't know that for sure. Let the SIT look into the matter," clearly indicating the trust deficit between the Supreme Court and the centre on the issue of black money. With camera person Anil in New Delhi, Jaskirat Singh Bawa for Headlines Today. Let me give you a sense, while all this noise is going out, about the official estimate of black money. In fact, there is no official estimate. So what do we really know about black money that is allegedly stashed abroad? Take a look at what Gaurav Sawant has found out just now. Thank you, Rajdeep. When it comes to statistics, figures unfortunately don't paint a very pretty picture. According to Ram Jethmalani, former union minister and senior lawyer who raked up this black money issue, 70,000 crore rupees of black money is stashed away in banks abroad. That's the first slide. Now, in this second slide, we'll tell you that India ranks 8th amongst top 10 developing countries that have the fastest outflow of funds to foreign countries. And the source of this is Global Financial Integrity. This is the 2012 report. Once again, if we were to talk about illicit assets, $487 billion. Indians have this kind of money stashed abroad from 1947 till 2010. The Transparency International report says that India ranks 94th amongst 176 countries when it comes to corruption and transparency. Sri Lanka fares better at 91, Pakistan fares worse at 127. Gaurav, appreciate that information, because that is the kind of information that, among others, I want to ask Baba Ramdev. Remember Baba Ramdev? He's disappeared from your television screens. Where has he been over the last several months? The man who claimed he was going to bring back black money to the country and was seen sharing a stage with Narendra Modi and others during the election campaign.
Well, a short while ago, I spoke to Baba Ramdev from Hardwar. I began asking him that very question. पिछले 6 महीनों से सर आप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं. You have been absolutely quiet. क्या है, क्या वजह है? Is it because you are close to this NDA government that you don't want to take any questions on the black money? अब आपका क्या कहना है जब सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा किया गया है ब्लैक मनी के मुद्दे पर? देखो राजदीप भाई, ना बाबा कभी मौन रहा, ना बाबा ने कभी पीछे कदम उठाए. कितने जुल्म और जाति झेले, हम अपने मुद्दे पर पहले अडिग थे, आज भी अडिग हैं. और आपको राजदीप भाई एक बात कह देना चाहता हूं, यदि और ज्यादा काले धन के मुद्दे पर देरी हुई और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं पहले की तरह रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करने के लिए फिर से तैयार हूं. लेकिन मुझे आदरणीय मोदी जी ने सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद भी काले धन के मामले पर पूरी तरह से आश्वस्त किया कि स्वामी जी मैं 100 नहीं 200% इस ब्लैक मनी के मुद्दे पर आपके साथ और हम काला धन लेकर के आएंगे. आदरणीय जेटली जी ने भी इस संदर्भ में मेरे से अनेक बार मुलाकात की, अभी भी अनेक बार मेरे इस संदर्भ में आदरणीय जेटली जी से बात हुई है, आगे भी करने वाला हूं आदरणीय जेटली जी और मोदी जी से इस संदर्भ में बात. मुझे आदरणीय जेटली जी, आदरणीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में, उनकी नियतों और उनकी नीतियों में किसी भी तरह का कोई शक नहीं है. लेकिन देरी होने से देश में गलतफहमी जरूर पैदा हो रही है. मैं चाहता हूं यह देरी भी नहीं होनी चाहिए और सरकार को सारे नाम सार्वजनिक करने चाहिए और जो उन्होंने काला धन जमा किया वो भी देश को तुरंत दिलाना चाहिए. बाबा, इसके अलावा मैं और कहना चाहता हूं राजदीप भाई, ये तो HSBC के अकाउंट हैं, जो सबसे बड़ा दुनिया का काला धन जमा करने वाला बैंक हो तो UBS है, उसका तो एक भी नाम अभी तक नहीं आया है. देखिए बाबा रामदेव जी, पिछले 6 महीनों से आपकी सरकार NDA की सरकार रही है जिसके साथ आप देश भर में घूमे और निकलता क्या है? 3 नाम. लोग कहते हैं कि आपने एक तरह से निकाला एक छोटा सा चूहा, क्योंकि उसमें से ऐसे भी नाम है जो UPA सरकार के टाइम पर भी थे. आपको मोदी जी और जेटली जी पर यह इतना भरोसा कहां से है जबकि 3 नाम निकलते हैं और वही आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं? NDA सरकार इज गिविंग द सेम आर्ग्यूमेंट्स जो UPA सरकार दिया करती थी कि हमारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स हैं, हम ये नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते. तब आपने कहा कि UPA सरकार कुछ छुपा रही है. अब आप कहते हैं कि NDA सरकार पर आपका भरोसा है. कहां से यह भरोसा आपका आ गया? देखिए राजदीप भाई, आप देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं. आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जरूर इस मामले में देरी हुई है और देरी होने से बहुत सी गलतफहमियां भी पैदा हुई हैं. ये गलतफहमियां आगे से पैदा ना हो, इसके लिए जो है मोदी सरकार को और सावधान रहने की आवश्यकता है और ज्यादा तीव्र गति से काम करने की आवश्यकता है. रिजल्ट ओरिएंटेड इफेक्टिव इसके ऊपर स्टेप्स उठाने की जरूरत है. अब तो कितने हमारे पास में इसके लिए हथियार हैं. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एक बहुत बड़ी संधि भारत और स्विट्जरलैंड से लेकर के सारे टैक्स हेवन कंट्रीज ने भी कर रखी है. तो चाहे भारतीयों का पैसा, चाहे NRIs का वो ब्लैक मनी, वो सब हम ला सकते हैं. और इसके अलावा मैंने कहा अभी चाहे वो UBS में और भारतीयों का पैसा जमा है और तमाम दूसरे 70 से ज्यादा टैक्स हेवंस में, ये तो 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला है, कोई 1-2 लाख करोड़ का नहीं है. और 90% यहां इलीगल गोल्ड में, लैंड में, रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिटिक्स में, ड्रग्स में, काला बाजारी में, हेल्थ, एजुकेशन, सब जगह काला धन पड़ा है. तो विदेशी काला धन, देश का काला धन, उन दोनों को लाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो कहा था कि टैक्सेशन, टेररिज्म और इकोनॉमिक अनार्किसिस देश को बाहर निकालना, उसके लिए इनको अपनी इंटरनल जो टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं और दूसरी तमाम इकोनॉमिक पॉलिसीज उनमें चेंज लाना पड़ेगा और तब जाकर के ये मुद्दा समाधान तक पहुंचेगा. तो ये छोटा मुद्दा नहीं, इससे देश की तकदीर, तस्वीर बदलने वाली. राजदीप भाई, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में यदि 16 करोड़ रुपए भी आता तो वो जब मनी इन सर्कुलेशन में आएगा तो 1000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था तैयार होगी. हमारा 1 रुपए लेने के लिए अमेरिका को $1.5 चुकाना पड़ेगा. तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको समाधान तक लेकर के जाएंगे. राजदीप भाई, आप चिंता मत कीजिए. मैं चिंता नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि रामदेव जी, आपने और नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन में कहा था कि 100 दिन में आप ब्लैक मनी वापस लाएंगे, आप नाम पब्लिक करेंगे जिनके पास इलीगल ब्लैक मनी खाते हैं. ये सब आपने कहा था 100 दिन में आप करेंगे. 150 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ है.
इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या ये केवल राजनीति के लिए आपने किया क्योंकि तब इलेक्शन आपको जीतना था? देखिए, पहली सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया भैया। उनकी तो यदि 67 सालों में देखा जाए तो 60 साल उनकी सरकार रही। 60 साल में क्या वो 60 करोड़ या 60,000 करोड़ भी लेकर के आए? अरे मोदी जी इतना तो लेकर इस तरफ कुछ कदम उठाए हैं। आगे कार्रवाई करने के लिए हम जरूर पूरे ताकत के साथ सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे और नैतिक धरातल पर रह करके राजनीतिक रूप से सरकार के इस कार्य के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और मैंने कहा उसके लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को समाधान तक पहुंचाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। थोड़ा वक्त जरूर लगाए, देरी हुई है, ये देरी नहीं होनी चाहिए। सर मेरी चिंता नहीं है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, कोई किसी को बचा रहा है। राम जेठमलानी जो एक समय आपके साथ हुआ करते थे, वो भी कह रहे हैं कि काले धन वालों को बचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये एक तरह से राम जेठमलानी कह रहे हैं, कुछ बीजेपी के जो पुराने नेता थे वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ऐसा है, मछलियों के बाद मगरमच्छों की भी बारी आएगी। और जहां तक आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, अब कुछ बातें हैं इसमें, मैं उसको यहां सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहता। उस मुद्दों को लेकर के जो अनावश्यक रूप से टकराव दिख रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो गंगा के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर सरकार ने कभी कुछ नहीं बोला, ब्लैक मनी के ऊपर उतना कभी भी दबाव नहीं डाला। हमारे ऊपर जो है आंदोलन के दरमियान जो है जो क्रूरता और बर्बरताएं की, उसमें भी जो है ज्यादातर जो है क्या क्या हुआ सब आपको पता है। तो ये कुछ ये सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो बात है इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर करना चाहता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। हम जरूर मोदी जी को मौका देना चाहते हैं, इसलिए कि एक पहली बार उन्होंने कमान संभाली है प्रदेश के बाद देश की, तो उनको कुछ मौका जरूर देना चाहिए था। हमने वो दिया है। आगे से अब इस मुद्दे पर कोई जो है लिपापोती हम नहीं होने देंगे। लिपापोती नहीं होने देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बार फिर, आपने यूपीए सरकार को तो एक भी मौका नहीं दिया। यू रिफ्यूज टू गिव देम अ सिंगल चांस। आपने अपना आंदोलन देश भर में छेड़ा था। मोदी जी को आपने तो एक तरह से एक खुली छूट दे दी है। पहले आपने कहा 100 दिन में आप ब्लैक मनी लाएंगे, अब 150 दिन हो गए। अब आप कहते नहीं, फिर भी पूरा समाधान है कि एक ना एक दिन मोदी जी काला धन वापस लाएंगे। कहीं लगता है कि आपकी जो दोस्ती है मोदी जी के साथ या भाजपा के साथ या एनडीए के साथ, इस वजह से आप बीजेपी को खुली छूट दे रहे हैं जो आप यूपीए को कभी नहीं देते थे बाबा जी। अरे साहब राजदीप सर देसाई साहब, उनको 60 देखो अब व्यक्तिगत तौर पर मत आइए राजदीप भाई। 60 साल से देश ने मौका दिया, 5-6 साल हमने मौका दिया, प्रधानमंत्री जी ने मुझे न्योता दिया, आज जो देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं उन प्रणब मुखर्जी साहब ने मुझे न्योता दिया, हमने उनको मौका दिया, उन्होंने बार बार धोखा दिया। अब आपके आदरणीय मोदी जी से यदि व्यक्तिगत रंजिश है तो आप उसको व्यक्तिगत रूप से उतारिए ना, मुद्दे के साथ मत जोड़िए राजदीप भाई। नहीं, मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं पूछ रहा हूं जो हकीकत है, क्योंकि जो नाम आए हैं वो छोटी मछलियों के हैं। ऐसा समझा जाता है जो बड़ी मछली है वो तो बैंक में अपने नाम पे बैंक अकाउंट रखते ही नहीं बाहर। बड़ी मछलियों को तो आप कभी पकड़ेंगे नहीं, छोटे को पकड़ेंगे। और फिर फर्क क्या रह गया, यूपीए हो या एनडीए? यही सवाल लोग पूछ रहे हैं आज। इसीलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि क्या बड़े मछलियां कभी पकड़ी जाएगी? क्या असलियत में काला धन कभी वापस आएगा? अरे मछलियां नहीं, मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। और मैं आपके चैनल पर राजदीप सर देसाई ये राज की बात कह रहा हूं कि हम किसी भी कीमत पर इस देश को काला धन दिलाएंगे। आपने हमेशा देखा है कि बाबा का कोई स्वार्थ नहीं था और कभी मैं रुका नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं। अब भी ना रुकने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, ना बिकने वाला हूं। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। वो वजीर हैं तो हम फकीर हैं, लेकिन इस मुद्दे पर चुप रहने वाले नहीं है। ये मुकाम तक मुद्दा पहुंचेगा, आप चिंता मत कीजिए राजदीप भाई, आप निश्चिंत रहिए। और
आप देखना इस मुद्दे पर आपको हमेशा खड़े मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो अड़ेंगे, संघर्ष भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। आपको बार बार मेरी चिंता आज पड़ रही है बाबा जी, लेकिन ये बताइए, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि अगर 6 महीने में ब्लैक मनी नहीं आता, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 मार्च तक एसआईटी को कहा है रिपोर्ट दे दीजिए, अगर 31 मार्च तक नहीं आता है तो क्या रामदेव जी उसी तरह से रामलीला मैदान जाएंगे, उसी तरह से आंदोलन करेंगे, उसी तरह से रास्तों पर आएंगे? यह साफ सवाल है। क्या आप एनडीए के खिलाफ आंदोलन करेंगे अगर एनडीए की सरकार काला धन और जो बड़े मगरमच्छ है उनको वापस नहीं लाती? देखिए, पहली बार तो मुझे भरोसा है कि आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात करने से ही बात बन जाएगी। और यदि किसी भी कारण से आंदोलन करना पड़ा तो बाबा रामदेव पहले की तरह से ही रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करेगा। चलिए बाबा जी, आपने बहुत बढ़िया बड़े बड़े बातें की है, अब देखते हैं ये बातें किस लेवल तक सच होती है। बाबा रामदेव, appreciate your joining us, speaking to us there from Hardwar, finally breaking his silence. We haven't heard a squeak from him on the black money debate so far. Therefore, I want to pose some big questions because they are relevant to what we are now going to discuss. Do the names provided to the Supreme Court really take the black money investigation forward? That's the first question that I will pose. The second question, why has the IT department and the ED moved so slowly? That's a question that has been raised today again in the courts. The third question, do all the 627 names submitted before the Supreme Court really have illegal foreign bank accounts? Is it fair to dub them all as having illegal foreign bank accounts? The fourth question, what happens to the right to privacy of those with legal foreign bank accounts? Is their right to privacy being violated? The fifth question, will the SIT be able to meet the deadline which has now been set by the Supreme Court? 5 big questions, and the really big question, can an independent probe really take place? Now it's up to the ED and the IT department to tell us whether an independent investigation can take place. That's the question that I want to take to my panel joining us today. Sandeep Bamza, editor of Mail Today, is back with us. He gave us a really informed opinion yesterday on this very issue. Prakash Chandra, former chairman of the CBDT, is there. I want to ask him about what is the role that the tax authorities will now have. Rahul Mehra, spokesperson of the Aam Aadmi Party, which has taken up this issue, is with us. Sanjay Jha, National Spokesperson, Congress, and Mahesh Jethmalani, senior lawyer of the Supreme Court. Appreciate all of you joining us. I just want to get a sense after what you've seen today, Sandeep. Am I to understand that the ball is now firmly in the court of the IT and the ED? Yesterday you told us on the program that the ED hadn't even begun proceedings. Someone rang me up late in the night saying, what about the fact that the director of the ED is actually a member of the SIT? Do you believe that this SIT can now deliver in 6 months? Is the ball squarely in the court of the IT and ED? Well, I think let's start with what transpired in the court today. Yes. And I think there's a greater element of confusion after what transpired in court today. Element of confusion? Yeah, I'll tell you why. Yes. On the one side, we see the judiciary impinging on the sovereign. Yes. Where 2 sovereign nations have entered into a tax treaty. So the judiciary says that forget confidentiality clauses, forget tax treaties. The SIT and the 2 gentlemen in charge, MB Shah and Ajit Parasit, will deal with this issue. Will deal with which issue? Tax treaties and confidentiality clauses. On the other side, we have a government, or we have successive governments which are taking refuge behind tax treaty obligations, saying that information flows will dry up. Which are the 3 cases that have come to light till now? LGT, where a whistleblower, Heinrich Kaiber, provided the names of 26 Indians. Hervé Falciani, a man who stole data from HSBC Geneva, stole data and gave it out. And 3, the International Consortium of Investigative Journalists, which has given 612 more names to Indian authorities, mind you. So there is 26 names, there's 628 names which were submitted this morning, and there is 612 names which are not being discussed anywhere yet. So what is the confusion? You have a government where a judiciary is impinging on its sovereign. You have again a government which is taking refuge behind tax treaties. None of these names have come through tax treaties. They have come from a whistleblower, Heinrich Kaiber. They have come from a man who has stolen data, Hervé Falciani, and they have come from an international consortium of investigative Either journalists. way, none of them have actually come through proactive efforts of the government of India. Which is the question. Now let's go to the United States and see what happened in 2009 when they put pressure on the Swiss government
and actually managed to get 4,450 names and money amounting to $18 billion from the UBS, where they put enormous pressure after the Lehman Brothers collapse. So you believe that the real test now is of the government of the day and the government investigating agencies? I have believed from the beginning that it is the government, it is incumbent on the government to do all the walking and all the talking in this regard, which no government has done. Forget the BJP. We have waited for many years for information flows. We have not got any information flow from any double taxation avoidance treaty. Okay, given that, effectively, in a sense, governments are continuums, whether it's UP or whether it's NDA. The CBDT remains there, the enforcement directorate remains the same. As someone who's been heading that organization, Mr. Chandra, do you believe that there is a strong case to be argued that our tax authorities have failed us? That they're either under political pressure or because quite simply some would say, are incompetent and have not been able to deliver. How do you respond to that charge? No, I don't think so. But yes, it's not that easy that money is lying somewhere and somebody can just go and pick it up. No, that I can see. But the fact is, other countries have been far more successful. Why is it that we have been so unsuccessful in prosecuting people when there is reason to believe that a hard investigation in cooperation with other countries could actually work? True. Where is the problem? But other countries, only United States, the example comes from that USA got this much. USA has they have their own might. They have economic might. They could put pressure on the Swiss. Are you saying that we had absolutely no leverage with the Swiss all these years? Effectively, you're admitting that today, that the Indian tax authorities had no leverage. As the United States. We don't have the same. Is that the sole problem, or is there political pressure? Let's be clear. Many allegations have been made against previous governments that notices are served and then those notices are used to extract money from the big fish. Is that true? No, I don't think so. Not true? No. Not true. That's not the reason. Not, there has been no external pressure in this entire investigation. No, not that. Not at all. In fact, since the names came to light, basically, the tax department has been investigating. But you see the procedures. We are, after all, a rule of law is there. We have three names come out at the end of the day. One bullion trader, one person with a small mining company in Goa, and another individual who claims he has now closed his account. What am I to understand? No. It's not only the names. We are not interested only the names to come out. Basically, the money which is there should be investigated. Income has to be assessed. Taxes have to be levied, collected. Okay. Interest, but it's not happened, penalty. Sir. I'm only going by track record. Mahesh Jethmalani, listening to Mr. Prakash Chandra, listening to what Sandeep Bamsai is saying, do you really believe that the government of the day, whether it's NDA, UP, I'm not going to make this about politics today. I just want to know whether you believe in this country, the IT department and the ED will now be allowed to function independently. Well, yes, because they are no longer subject to any political sovereign. The investigations now have been put, all these departments have been put together and an SIT formed by the Supreme Court. And the Supreme Court is now monitoring it, and they put very effective time deadlines. And I don't think those time deadlines will not be met. I think they will in fact be met because, according to me, at least look, there are two issues. One is the existing names and accounts which you have, and one is for the future. How do you go scouring around the world in the other tax havens? The first task is to get after these people whose names you have. And it's a very easy task. I mean, first of all, you have to find out whether they're non-resident Indians or resident Indians. If they're resident Indians, do they have the requisite permissions? If they have the requisite permissions, then you exempt them. But the point, let me for a moment, sorry Mahesh to interrupt, but what I'm trying to understand is you are also confessing today that it requires the courts to intervene for the political sovereign or the political authority of the day to actually ensure the independence of the enforcement directorate and the IT. It's the court which had to intervene to ensure this. Rajdeep, unfortunately, that has always been the case. The judiciary has always stepped in. It has always stepped in. If you look at the history of the last 10 years, it is the judiciary who has brought the corrupt to book. I mean, it's not been the investigating agencies or the political or their political sovereigns. It has been the judiciary that has been taking an extremely proactive role, and thank God for that. Otherwise, we'd be deep in the mire.
You know, but that's a sad case. At least there's some transparency, some accountability. So the court has to enforce accountability of the executive. That's effectively what's happening, which really reveals very poorly, Sanjay Jha, on both the governments. The NDA government now and the UPA government in particular. You were in power for a much longer period. The NDA can at least claim they've been in power only for 5 months. But somewhere the fact is the files just did not move when you were in power, when it came to the issue of black money. Yeah, you know, Rajdeep, I want to keep the politics out of it, as you yourself said. Yes. But, you know, truly the bottom line is that, you know, I heard somebody mention on your panel about judicial overreach. Now, in the case of black money, since the numbers are definitely astronomical, and we don't know what the number is. Some people speculate $500 billion, somebody says 70,000 crores, but it's a big number. We all know that. In that case, I think if the judiciary has actually stepped in to accelerate the process of investigation, I don't think one should really look at that as an overreach. It reveals the failure of the country. It reveals the failure of the country's political executive. It reveals the failure of the and of the investigating agencies. The court has lost confidence in the ability of the government of the day, whether it was UPA earlier or NDA today, to carry out an independent investigation. And I just want to comment on that. Yes, I want to enlighten you here. Yes. On this. Rajdeep, give me a minute. You see, today we are talking about the Swiss banks, you know, the LGT bank, etc. But, you know, there are multiple tax havens. I mean, why are you ignoring New Jersey or, you know, British Virgin Islands, Channel, you know, your Cayman Islands? There are Singapore, Cyprus, there are so many of them. So end of day, even right now, if you're talking about these names which have been submitted to the Supreme Court, if you really look at it in terms of a mathematical distribution, the numbers are definitely much larger and spread over multiple countries. So, you know, whether the political executive of today, because I can't respond on what we could have done differently because we are no longer in government. No, but we will actually tell you that we pushed for...